अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ज़ैनी खान अगेन। छोटी सी बात, छोटी सी न्यूज़ लेकर आपके सामने आई हूँ। और आज मेरे साथ जो हैं लेडी जो आ रही हैं, उनका नाम है ज़ारा मेहता, जो कि ऑल द वे डेलिस से आई हैं। उनके पास हमारे लिए कुछ जो है उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहती हैं। तो आज मैं सबसे पहले उनको यहाँ पर लाने से पहले मैं ये कहूँगी कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये सिर्फ़ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ज़ारा मेहता के पास कुछ स्टोरी है अपनी लाइफ़ की बताने के लिए, और जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप बताइए, आप सुनिए और आप यहाँ पे कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन है और आपको कितनी सच्चाई लग रही है इन चीज़ों में। मैं ज़ारा मेहता को स्क्रीन पे आपके साथ लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। Walaikum salam. How are you? I am good ज़ारा, आप कैसी हैं? I'm good. I'm okay. Okay. I really hope कि सारी चीज़ें ठीक हों। बट ज़ारा, जो भी चीज़ें मैंने सुनी मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ सुन के। मैं यहाँ पर जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, आपसे पहले तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मतलब आपकी ये लाइफ़ की जो भी चीज़ें आप कहाँ से स्टार्ट करेंगी? कहाँ से शुरू हुई? So I was in Pakistan and I was living a pretty happy life there. मतलब मेरे family सारी पाकिस्तान में थी and friends and everything, and किसी ने बोला शादी.com पे प्रोफाइल बना लो। मुझे तो पहले तो मजाक लगा, पर मैंने कहा चलो, you know, why not, you know, पूरी दुनिया कर रही है, why not? I made a page and मुझे, I'm going to refer to this person as my husband. That's all I'm going to say. My husband contacted me. He left me a very long message and he said, I know, okay, you're not going to like my request or accept my request, but please, like, you're so pretty. You seem like such a nice girl and I feel like I would be able to keep you happy. और मैंने ना honestly एक सेकंड, थोड़ी-सी यहाँ पे कन्फ्यूजन है। आप ये बोल रही हैं मुझे कि आपने शादी.com पे प्रोफाइल बनाई, तो किसी बंदे ने आपको कॉन्टैक्ट किया जो कि आपकी इंटरेस्टेड था। तो ओके, जो इंटरेस्टेड था, या जी, जिस आपको रिक्वेस्ट आती हैं, तो उनमें से उसने अपने रिक्वेस्ट के साथ एक पूरा एक लंबा सा मैसेज भी लिखा हुआ था, which that's what I noticed other than another request. तो जब मैंने वो देखा तो I didn't feel bad, but I was just like, you know, वो इतनी कोशिश कर रहा है, चलो एक्सेप्ट कर लेते, एक्सेप्ट करने से क्या होगा, you know. मैंने एक्सेप्ट की और बातें शुरू हो गई, उसकी मैसेजेस आते थे, कॉल्स आती थी, मुझे हंसाता था एंड मेरे साथ हेलो ओके मुझे हंसाता था, यू नो, मुझसे बातें करता था, जिंदगी की बातें करता था। एंड मेरे 2012 में डैड की डेथ हुई थी, तो मेरे डैड के मुतालिक जो हरकतें थी उसमें काफ़ी थी। वो जिस तरीके बोलता था, वो जिस तरीके छोटी-छोटी चीज़ें करता था, लाइक खाना खाते हुए अपनी शर्ट पे थोड़ा-सा गिरा देता था खाना, और इस तरीके की आई डोंट नो, लाइक जस्ट
बहुत तो रिजेम्बलेंस ये थी सारी थोड़ी चीज़ें थोड़ी, पहले एंड वो आपने मुझे बहुत शादी.com में पुल की उस तरफ। शादी.com में तो आपकी फिर उनसे भी मुला मैंने सोचा कि बहुत अमेरिका में रहता है, मतलब कहाँ कहाँ इतना दूर जाना, कहाँ इतने दूर, पर रिश्ता लिखा होगा तो देखी जाएगी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान आएगा, और नवंबर के एंड 2015 की बात है। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता हूँ, वो कोमे में है, उसकी 10 साल की बेटी है, वो अब ज़रा 1 सेकंड, ये सारी पता नहीं चीज़ें क्या अभी तक होगा, ये ज़रा होगा आपको वो मेरी होगा, आवाज़ आ ये रही है? सब कुछ चलता रहा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई कैन नॉट हियर यू। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? नो, आई स्टिल कैन हियर यू। सीरियसली ओके, सो ज़ारा आपको मैं बोलूँगी कि दोबारा से उस लिंक को आप लॉगिन करें। लेट जो लिंक था आप मी उस पे दोबारा लॉगिन करिए। सॉरी, यहाँ पर कुछ मसला हुआ है, ज़ारा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो कैन यू लॉग hear you now. Okay, we're कैन यू fine. हियर मी नाउ? Yeah, I can hear you now. ओह, So I think I परफेक्ट, just needed to exit परफेक्ट। this मैं bit. ये कह Yeah. रही थी आपसे, Oh, आपने जो मुझे स्टोरी बताई, आप ये कह रहे हो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पहले शादी.com पे आपकी उनसे बात हुई, उसके बाद आप लोग की चैटिंग होना शुरू हो गई, फ़ोन पे बात होना शुरू हो गई yeah. फोन पे और बात आप होना शुरू एक्सपेक्ट हो कर गई, रही थी और कि वो उसने पाकिस्तान आके आपसे मिलेंगे। उसने पूरा प्लान बनाया कि मैं नवंबर के एंड में पाकिस्तान आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, एंड लेट्स सी वेयर इट गोस फ्रॉम देयर। आई सेड ओके फाइन, लाइक व्हाटएवर, व्हाई नॉट। उसके आने के करीब दिन में उसने बोलना शुरू कर दिया कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, वो कोमे में है, उसकी बहन की 10 साल की बेटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड उसके लिए दुआ करना। आई थिंक मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि मेरा एक जानने वाला है, उसकी बहन बीमार है, उसके लिए पोस्ट करना। हफ्ते 10 दिन बाद उसकी बहन की डेथ हो गई। उसने मुझे बोला उसकी बहन की डेथ हो गई है, फोन भी आया, रोना शोना भी चल रहा था, पूरा एक उसने सिनेरियो बनाया। उसके कुछ दिन के बाद ड्रामे करना शुरू हो गया, मतलब अल्कोहल ड्रग्स ले लेके, शराब पी पी के गाड़ी में ड्राइव करता था, मुझे शो करता था लाइक ही गॉट अ DUI। उसका बेस्ट फ्रेंड मुझे मैसेजेस ये करता सारी चीज़ें रहता फ़ोन था। पे हो रही थी या ये आप फ़ोन आस पे हो रही थी, ये फ़ोन सब पे हो कुछ रही थी? फ़ोन पे हो रहा था, कॉल्स पे हो रहा था, टेक्स्ट पे हो रहा था, ओके। ठीक है? एंड मुझे बाकायदा पुलिस की सायरन्स की आवाज़ भी आई जब उसने मुझे बोला कि ही गॉट अ DUI। तो आई हुँ, वाज़ हुँ, हुँ। एक्चुअली ऑन दैट कॉल जब उसको व्हेन ही गॉट दैट DUI, एंड फॉर दैट वन डे ही वाज़ गायब, फॉर दोज़ 24 आवर्स वो गायब था। और मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने मुझे मैसेज करके कहा डोंट वरी, वो जेल में है, ही गॉट अ DUI, स्टफ लाइक दैट। हुँ, हुँ। आई सेड फाइन। उन सब ने मुझे कन्विंस किया, अली जो मेरा हस्बैंड है उसने भी, और जो बकायदा बेस्ट फ्रेंड ने भी, सब ने कन्विंस किया कि तुम अमेरिका आओ, तुम बात करो, तुम उसको सपोर्ट करो, वो इस वक्त बहुत चीज से गुजरा है, उसकी बहन की डेथ हुई है, उसकी बहन की 10 साल की बेटी है, वो उसका भी ध्यान रखता है, सो तुम अमेरिका आओ, तुम अमेरिका आओ। मुझे टिकट सेंड किए उसने, एक दफा नहीं, 2 दफा भेजी। तीसरी दफा I had to get my own ticket because I had to renew my तो passport आप and 2 दफ़ा आई जब उन्होंने टिकट भेजा, आपके पास अमेरिका का वीज़ा था पहले से? मेरे पास पहले से था, या, ओके। और मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया बिकॉज इट वाज एक्सपायर्ड, और मैं जनवरी 18th को या 17th को पाकिस्तान से निकली, एंड आई लैंडेड इन न्यूयॉर्क जनवरी 19th। एंड न्यूयॉर्क से फिर मेरी फ्लाइट थी डैलस को, लेकिन उस टाइम देयर वाज अ स्नो स्टॉर्म, थोड़ा सा डिले हुए कुछ दिन, बट मैं डैलस पहुंची। उसने मुझे बहुत इज्जत से डील किया, बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके, यू नो तो बिल्कुल जब आप नॉर्मल, उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रीट किया? बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कुछ कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत प्यार से मिला। ही हैड ऑल ऑफ माय अकोमोडेशन रेडी, मैंने उससे कहा भी नहीं था, उसने सारी अकोमोडेशन तैयार की, एंड मैं उस होटल में रही काफ़ी अरसा, लाइक 2-3 वीक्स, और हुँ, उसके हुँ। बाद उसने मुझे एक कॉन्डो में शिफ्ट किया। और
उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, जो कि थोड़ा सा रेड फ्लैग था, बट पता नहीं, मैंने कहा कि हो सकता है मैं आई हूँ तो वो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा इधर हो गया है, डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, सो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर जब मैं कॉन्डो में शिफ्ट हुई तो लाइफ रूटीन में आ गई, इट वाज द नॉर्मल रूटीन लाइफ, एंड उसमें खाना पीना रहना घूमना सब कुछ चलता था, बस वो मेरे साथ रहता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली like we weren't married, right, or anything, तो like we used to hang out, go everywhere, used to take care तो of जब आप everything। आई तो आप उनकी फैमिली से मिली थी? उसने मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलाया, उसने मुझे बोला कि उसकी बहन की डेथ हो गई है, उसके घर के हालात अभी बहुत थोड़े से कमजोर हैं, क्योंकि अभी तक 40वां भी नहीं हुआ है, और लोग क्या कहेंगे कि मैंने दूर से किसी को बुला लिया है। तो उसने अपनी फैमिली में से किसी को बताया नहीं था, लेकिन उसके बेस्ट फ्रेंड, वो जो एक बेस्ट फ्रेंड था, उसको आइडिया था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। ओके, क्योंकि वही मुझे कन्विंस करता था कि तुम अमेरिका आओ, वो और माय हस्बैंड। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने अभी जॉइन किया है, मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर जो है ज़ारा मेहता ऑल द वे डैलस से आई हैं और जो है वो अपनी स्टोरी सुना रही हैं, जिसमें वो एक बंदे से शादी.com पे मिली और वो उस वक़्त पाकिस्तान में थी, उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान का वीज़ा था, आई मीन अमेरिका का वीज़ा था, और वो बंदा अमेरिका में था। अमेरिका से उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे बातें शुरू हुई, उनकी फ़ोन पे बातें हुई, उनकी चैटें स्टार्ट हुई, और उसके बाद उन्होंने जो है मिलने के लिए उस बंदे से ऑल द वे अमेरिका आई, और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ वो उस बारे में बात कर रही हैं यहाँ पे। तो आगे फिर क्या हुआ ज़ारा? आगे फिर लाइफ नॉर्मल तरीके चलती गई। उसने मुझे घुमाने वेगास लेके गया। सॉरी, ये सब कुछ होने से पहले 1 सेकेंड बिफोर ये सब कुछ हुआ, फेब्रुअरी के शुरू में मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, और उसकी बहन की डेथ की वजह से उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और उसकी माँ अस्पताल में है, उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो अस्पताल में, वो स्टेबल है पर फिर भी वो अस्पताल में। 15 दिन के बाद मुझे उस शख्स ने बोला कि माँ की भी डेथ हो गई है। ओके, सो माँ की भी डेथ हो गई। आपने मालूम किया कि रियलिटी में माँ और सिस्टर की डेथ हुई थी? मैं इतना नया था कि मुझे लगा नहीं मुनासिब है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर करूं, फैमिली में, कि मैं पूछूं और कि सब कुछ छोड़ो। आपका कहाँ से ताल्लुक है पाकिस्तान से? लाहौर से। लाहौर से, ओके। जी, सो मुझे मुनासिब नहीं लगा, कि मुझे, मैंने कभी ऐसा झूठ नहीं बोला है, कि किसी की डेथ हो दैट्स गई ट्रू। और नहीं है, तो मैं क्यों किसी की फैमिली को जाके कहूँ कि आप आप क्यों अब माँ कहाँ है, बहन कहाँ है, 40वां कहाँ है, कब्र कहाँ है, मैं कैसे पूछ सकती हूँ जब एक बंदा बोल रहा है, मैं उसको इतना जानती भी नहीं हूँ, लेकिन अब हो गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, what can I do? I can only support that person at there and wait कि कब वो मुझे अपनी फैमिली से मिलाएगा, और कब वो मुझे अपनी माँ की कब्र पे लेके जाएगा, और कब वो अपनी बहन की कब्र पे लेके जाएगा, राइट? सो माँ की भी डेथ हो गई, उसके बाद उसने बोला उसका एक बाप रह गया है, बस उसने मुझे शुरू से बोला था मेरा एक बहन है, माँ है और बाप है, ठीक है, माँ और बहन तो मर गई, ठीक है, अब बाप रह गया है, ठीक है। उसके बाद बाप ने मुझे मैसेजेस करना शुरू किया किसी और नंबर से, ठीक है, ओके। एंड मुझे मेरा हस्बैंड भी कहता था कि ये मेरा बाप है, इससे आराम से बात करना, इसको भी पता नहीं है कि तुम यहाँ हो। ओके। फिर एक दिन हमारी कोई लड़ाई हुई थी, काफी महीने गुजर गए थे, और उसने फैमिली से नहीं मिला रहा था, तो मैंने कहा नाउ दिस इज अ रेड फ्लैग, अगर तुम अपनी फैमिली से नहीं मिलाओगे तो मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी चक्कर लग रहा है मुझे, लाइक एज अ वुमेन इंस्टिंक्ट्स मुझे लगा कुछ गलत है, एंड आई सेड if you don't bring your father, you don't bring your family, तो I'm exiting। उस पे फिर एक शख्स मेरे घर आया, शलवार, उसने उस दिन
पता नहीं सलवार कमीज पहनी हुई थी या पैंट शर्ट पहनी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट काफी बुजुर्ग थे, मेरे घर आए, मुझे सर पे प्यार किया, बैठे घर पे, चाय वगैरह मैंने उनको बना के दी, एंड उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड का फादर हूँ, फादर, तो ओके। टेक्निकली मेरा जो ससुर था, राइट। हम्म। So I'm going to make this story a little bit shorter as यस, well, क्योंकि अगर मैं ओके। डिटेल में जाऊंगी तो नो, आई बहुत अंडरस्टैंड। यस, ठीक। ये बहुत ना एक्सटेंड हो जाएगी वीडियो। तो हम्म। बहन कभी थी नहीं मेरे हस्बैंड की, बहन एग्जिस्ट नहीं करती है, बहन ओके, का नाटक था सारा, ओके, और उसके रिकॉर्ड्स में कोई डीओआई नहीं है, तो ओके, वो उस रात या उस दिन अरेस्ट नहीं हुआ था, ये पब्लिक ओके। रिकॉर्ड है। डीयूआई, आई डोंट नो पब्लिक रिकॉर्ड है कि नहीं, बट आई नो कि आप पता कर सकते हो अगर समवन हैज अ डीयूआई, ही डजंट हैव अ डीयूआई। ओके, उसकी जो माँ है वो पाकिस्तान में बैठी हुई है, ठीक है, उसकी पहली बीवी के साथ रहती है, ठीक है, ओके। जिसका मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उनकी डिवोर्स हुई भी हुई है या नहीं, कि उनका क्या चक्कर, आई तो डोंट नो। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने जब अपनी शादी.com पे प्रोफाइल बनाई तो उसमें अपनी पहली बीवी का कोई ज़िक्र नहीं था और कोई उन्होंने जिक्र अपने नहीं आप को किया, सिंगल या डिवोर्सी कह के लोगों को ढूँढ रहे थे। डिवोर्स भी नहीं उसने कहा, उसने लिखा हुआ था, और मैंने स्क्रीनशॉट्स पोस्ट भी की है अपनी प्रोफाइल पे, हुँ, हुँ। उसमें लिखा हुआ है कि ही इज नेवर मैरिड, he has no ओके, kids, he is ओके, single, and he's 37, okay। ओके। मेरा खामन 1971 में पैदा हुआ था, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसके मुताबिक he was not 37 years old उस हुँ, टाइम हुँ। भी, ठीक है। ओके। उसके बाद मुझे उसने बोलना शुरू कर दिया कि मैं लॉ एनफोर्समेंट में हूँ, मैं सीआई में हूँ, मैं अब, और फिरता इस तरीके था कि लगता भी था, ठीक हुँ, है। उसकी हुँ, गाड़ी चलाने की $200,000 की तो सिर्फ उसकी गाड़ी थी, उसकी गाड़ी हुँ, में कैमरास लगे हुए थे अजीब अजीब के, उसकी हर चीज बहुत स्नीकी थी, उसके पास डिवाइसेस होती थी, उसके पास आईडी कार्ड्स होते थे, उसके पास बैजेस होते थे। अब मुझे नहीं पता अगर आप बैज फेक बना सकते हो या आप कोई आईडी कार्ड फेक बना सकते हो, उसके पास गन्स होती थी, और आई मीन मैंने ऐसे कभी लोगों के साथ डील नहीं किया है, ठीक है। तो हुँ, मुझे अगर कोई बोल रहा है कि मैं लॉ एनफोर्समेंट में हूँ और उसके पास आईडी बैजेस और ये सब कुछ है, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। जस्ट लाइक मुझे कोई कहे व्हाट डू यू डू ज़ारा, मैं देन आई से आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं अपनी अपनी क्राइटेरिया और अपनी चीजें प्रोवाइड कर सकती हूँ, उसी तरीके उसने भी प्रोवाइड की। हुँ, हुँ, हुँ। ना ही मुझे उस सिचुएशन में पढ़ना था, ना ही मुझे उस सिचुएशन के डिटेल्स चाहिए थे, क्योंकि अगर वो लॉ एनफोर्समेंट में है या अंडरकवर है, तो आई डोंट वांट टू नो एनी ऑफ दैट, दैट्स नॉट माय बिजनेस, एंड ही शुडंट इवन हैव टोल्ड मी इफ दैट्स हुँ, द केस, बिकॉज़ दैट शुड हैव बीन सीक्रेट, राइट। अगर आप काम हुँ, करते हुँ, हो सीक्रेट व्हाटएवर जो भी है। तो उसने मुझे बोला मैं सीआई के लिए काम करता हूँ, ठीक है, चलो वो भी मान लिया। हुँ, उसके बाद उसने मस्जिद में मेरे साथ निकाह पढ़ाया, जून हुँ, 1st को या जून 2nd को 2016 में, ठीक है। ओके, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, इधर इज जून 1st और जून 2nd। ओके, मौलवी ने निकाह पढ़ाया, और हुँ, हमारी कोई मैरिज लाइसेंस रजिस्टर नहीं हुई थी, कोई कुछ नहीं हुआ था, वी वॉक्ड इन, हुँ, 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 मौलवी ने पूरी वो आयत पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, दो विटनेसेस पहले से वहां तैयार थे, हुँ, मेरे हस्बैंड के कजन्स, apparent cousins, I don't know if they were cousins, who they were, I don't know, वो आए, मेरी मॉम भी वहां शामिल थी, उन्होंने विटनेस बने, निकाह हुआ, आई सेड मंजूर है 3 दफा, मैं तो कबूल है भी नहीं बोला, मैं तो मंजूर है बोला, आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। हुँ, 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 He hugged me after the nikah was done, उसने मुझे फूल दिए, उसने मुझे हग दी, हम गाड़ी में बैठे और जी जिंदगी शुरू हो गई, हुँ, 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 उससे पहले वो मुझे वेगस भी लेके गया, उससे पहले वो मुझे सैन एंटोनियो भी लेके गया, और सैन एंटोनियो ले जाके ये निकाह से पहले he asked me to get married. Like he was like, "Can you marry me?" Like he had a whole proposal done. The hotel also knows. Like I can pull that up. I have cards that congratulated us and all that. They all knew what is happening that day. हुँ, 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 Okay. And we actually were in a spa, and he proposed while I was coming down the stairs, and he even has a video of that. I don't know if he would ever show it to anybody, but yeah. And उसके दौरान उस टाइम से लेके शादी के दिन तक
मुझे मेरा खामन एक बात कहता रहा which was very weird. बट क्योंकि इस पॉइंट तक मैं इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी, मैं अपनी फैमिली से इतनी सेपरेटेड हो चुकी थी कि जो मेरा खामन बोल रहा था या फियांसे or whatever you want to call him at the time was right, क्योंकि वो मुझे हर अपने झूठ का एविडेंस प्रोवाइड करता था. सो अगर वो कोई झूठ बोल रहा है तो पहले वो मुझे एविडेंस प्रोवाइड करता था कि ये लड़की को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. Okay. तो चलिए, जैसे आपका निकाह हो गया, निकाह के बाद क्या हुआ? ओके, निकाह के पहले because this is the first time I'm actually going live with this, so I'm going to go back and Yeah. forth, so please cope with me here. हम्म. निकाह से पहले I don't know the exact time, but निकाह से पहले एक चीज मुझे मेरा खामन बोलता रहता था, और वो बोलता था, and this is obviously going to sound a little bit weird, but for the Desi community and everything, but वो मुझे कहता था, I want to have a threesome. I want to have a threesome with somebody else. And this is America, and you're Americanized, and I want you to perform this act with me. I refused. I didn't want to do it. And he just kept कहता रहा कि तुम करो, तुम अमेरिकनाइज्ड हो, तुम बोरिंग नहीं हो. सोच तो मैं ये रही थी कि भाई अभी तो तुम्हारी माँ की और बहन की डेथ हुई है, ठीक है, तुम्हें तो अफसोस में होना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया तबाह हुई है, बट तुम्हें थ्रीसम की पड़ी हुई है. फिर उसने क्योंकि सबसे ताल्लुक खत्म करवा दिया था, दोस्तों से, फैमिली से, वो जो कहता था वही होता था. उसने मुझे एक दफा कार रिफ्यूज किया, दूसरी दफा कार रिफ्यूज किया, तीसरी दफा कार रिफ्यूज किया. 2 महीने तक यही बहस चलती रही कि भाई आई वांट टू डू दिस. और जब मैंने उससे पूछा कि with who, he said not with a woman, with a man. ओके. मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगी आपको. आपने जो मुझे बोला, ये आपने बोला कि ये निकाह से पहले हुआ था. हम लोग इतने ज्यादा, हम लड़कियां इतनी सख्त होती हैं कुछ चीजों में, और खासतौर पे जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो आपको कोई इस तरह की सिचुएशन में डाले, तो हमारे लिए, मतलब हम जो जिस तरह के माहौल में बड़े होते हैं, हमारे लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती. इवन सोचना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी एक्सेप्टेबल नहीं होती. तो Yes. आपने वक्त, जबकि आपकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, Yes. तो उसी वक्त सारी चीजें उसके साथ खत्म क्यों नहीं करी? Honestly, I don't know. मैं आपसे झूठ बोलूं, मैं आपको बोलूं कि ये था वो था, I don't know. Maybe I was in love. Maybe मैं उसकी बातों पे बहुत यकीन करती थी. Maybe उसने मुझे ग्रूम कर लिया हुआ था. You know, maybe I was very paranoid. मुझे याद है मैं उस टाइम बहुत paranoid रहती थी. दरवाजा भी खटकता था तो मतलब एकदम हो जाता था. फैमिली से बात नहीं, दोस्तों से बात नहीं, बाहर नहीं जाना. मैं एजेंट हूँ, मेरे दुश्मन हैं, बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर अकेले कहीं नहीं जाने देता था. उसने मुझे ना एक पैरानोया में रखा हुआ था. मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी. बट फिर कभी कभार नॉर्मल हो जाता था, बाहर जाना, घूमना फिरना. बट कहता था रोना नहीं है, अपसेट नहीं होना, लोगों को दिखाना नहीं कि तुम्हें कोई पेन है, बट यू हैव टू एक्ट नॉर्मल. एक्ट नॉर्मल ज़ारा, एक्ट नॉर्मल ज़ारा, कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी बीवी होने वाली हो, तुम्हें मुझसे प्यार है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना. शादी भी हो गई. उसके बाद भी ये टॉपिक चलता रहा, करना है करना है करना है, ये सब कुछ होना है. And then there was one more character in the mix. There was another friend he introduced me to, who he said कि ये law enforcement में भी है. एक खातून थी, उसका नाम, उसको कैट बुलाते थे. और वो कहता था कि ये मेरी पार्टनर है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये मेरी एक्स भी है. Okay. And he used to say that she is the mother of my child as well. I have a child with her. And because she works for Scotland Yard, I work for CIA. So we have an agreement behind closed doors and nobody knows.
ओके ओके। अब मेरा जिस काम से कोई ताल्लुक नहीं है ना, मैं उस काम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ नहीं सकती हूँ, ना कोई समझ सकता है। मतलब मेरा एंटरटेनमेंट से ताल्लुक है ना, तो मैं एंटरटेनमेंट की कोई भी बात आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। बट सीआई में और स्कॉटलैंड यार्ड में और एफबीआई में क्या होता है, आई डोंट नो। तो अगर उसके बच्चे को प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका या कोई एग्रीमेंट या कोई सिविल अरेंजमेंट और समथिंग था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, सो आई फॉलोड व्हाटएवर ही सेड। तो उसने फिर जब मैंने वो डिनाई किया, जब मैंने थ्रीसम को डिनाई कर दिया एंड उस टॉपिक पे डिस्कशन होती नहीं थी, आई यूज्ड टू गेट वेरी इमोशनल। आई यूज्ड टू से कि हाउ कैन यू शेयर योर वाइफ्स बॉडी विद अनदर मैन, एंड तुम इस्लामिक बनते हो, तुमने निकाब पढ़ाया है, तुमने सब कुछ किया है, हाउ कैन यू डू दैट? Like why would you want to do that? Why? Like मेरे में कमी क्या है? तुम्हें मतलब कि क्यों? Why? You know? Okay. So उसके बाद फिर वो जो खातून थी वो मुझे मैसेज करती रहती थी कि अली के बिजनेस में आज खराबी हो गई है, अली ने नया हो। तो ये फिर सब आप ये सब आप शादी से पहले की बात बता रही हैं, शादी के बाद की बात बता रही हैं? शादी की बात बता रही हैं। ओके, शादी यहाँ पे हो गई। तो शादी तो हो गया। हाँ, शादी के बाद क्या हुआ? सॉरी, मैं एक्चुअली चीज़ें स्टोरी में खुद भी समझना चाह रही I हूँ know that. I know और that. जो है I know that. Actually मैंने I'm स्टोरी being एक very neutral here and I मैंने wanna know about you and then I'm मैंने like स्टोरी क्योंकि असल में हमेशा नहीं, नहीं, कोई बात खुल नहीं। के You बोली don't है, have तो to say. कभी कभार But only thing that I was very I mean I'm sure आपका अपना डिसीजन था, आपने जो भी चीज़ें करी सोच समझ के करी होगी, मुझे नहीं पता उस वक़्त आपके साथ क्या सिचुएशन थी। लेकिन इतना कहूँगी कि जब कोई चीज़ गलत लग रही हो, तो उस रास्ते को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि राइट शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ़ का और जो राइट है अगर आप ने इतनी बड़ी बातें उन्होंने शादी से पहले स्टार्ट कर दी थी, तो राइट आपने वो राउट चेंज क्यों नहीं किया? उसमें आप इतना ज़्यादा किसी से प्यार हो जाना कि उसकी गलतियों को एक्सेप्ट करना, राइट तो वो चीज़ थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आई। लेकिन शादी चले आपने मुझे ये बताया था कि I आपने still managed to get married to this guy. I don't know यस why I did it. I honestly, I guess I loved him. That's all I can say. हुँ, हुँ, And I had been in the United States, I guess 5 महीने हो गए थे या 6 महीने हो गए थे जब हुँ, हमारी हुँ, शादी हुई। तो उसके पास मेरा पासपोर्ट भी रहता था क्योंकि उसने मुझे बोला था कि वो इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है because I'm a Pakistani citizen. हुँ, So हुँ, he was applying for my immigration, and a week after our nikah, he got a marriage license. हुँ, We हुँ, went to हुँ, Dallas County और हमने उस county से marriage certificate, marriage license, whatever वो issue हुआ, and we were married. उसने मुझे बोला we're married, you know. He showed me a signed document as well saying कि मैं अपने ऑफिस से खुद ही करवा लूंगा, तुम टेंशन ना लो। उसने डॉक्यूमेंट भी साइन करवा दिया और जो लीगैलिटीज थी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में शादी करने की वो उसने पूरी कर दी और उसने मुझे मेरे सामने पेश कर दिया। अच्छा। Okay, now that woman kept messaging me. The cat character never existed, but that cat character kept messaging me. Her name was Cat. That's just it. That's all ओके, I know. So Cat would ओके, always say, तुम्हारे खामन के बिजनेस में आज ये नुकसान हुआ है, आज उसने होटल खरीदा है, आज उसके बिजनेस में ये नुकसान हुआ है, आज उसके बिजनेस में वो नुकसान हुआ है। और जब मेरा खामन मेरे पास आता था तो पसीने छूट रहे होते थे, हार्ट अटैक का ड्रामा करता था, एम्बुलेंस बुलाने का ड्रामा करता था कि यार मतलब he used to look like he's stressed, you know, and I हुँ, used to be हुँ, like, हुँ, हुँ, why are you हुँ, stressed? तुम्हें किस चीज की स्ट्रेस है? तो वो बोलता था कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन वो जो कैरेक्टर थी जो मुझे टेक्स्ट करती थी वो बोलती थी कि तुम्हारे खामन की बिजनेस में आज ये नुकसान हुआ है, तुम्हारे खामन की बिजनेस में ये नुकसान हुआ है, तुम्हारे खामन की बिजनेस में ये नुकसान हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। ठीक है, हुँ, 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 तो इनसाइट्स वो मुझे देती थी और मेरा खामन आके मेरे सामने ड्रामा करता था बीमार होने का। ओके, ओके, तो फिर एक रैंडम डे उस खातून ने बोला कि द ओनली वे कि तुम्हारे खामन का बिजनेस सही हो सकता है उसके
होटल का जो डील चल रही है वेगस में, एक उसकी डील चल रही थी वेगस में, आई डोंट नो कोई बिजनेस डील थी रिगार्डिंग सम होटल। वो डील खत्म हो जाएगी अगर तुम उसके बॉस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखो। सो उस खातून ने मुझे बोला कि उसका बॉस बोल रहा है कि डील ऑफ है unless you sleep with me Okay. if I sleep with his boss. Okay. I said no. And that's So after you got married? after I got married. So now I'm Okay. married. He has my passport. He's applying for my immigration. We're living day to day life. मेरे साथ फैमिली बात नहीं कर रही है, मेरे साथ फ्रेंड्स बात नहीं कर रहे, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये एक स्टोरी चल रही है, मतलब यही मेरे दोस्त हैं। मेरा खान मेरा दोस्त है, और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं वही मेरे दोस्त हैं। चाहे वो उसका दोस्त हो, चाहे वो कैट कैरेक्टर हो, या जो भी कैरेक्टर हो, वही सब लोग मेरी दुनिया है, और कुछ नहीं। ना मैं घर से बाहर निकलती थी, ना मैं किसी से बात करती थी। That's just what my life was. So वो जो कहते थे वही मैं सुनती थी, कभी कोई क्वेश्चन भी करती थी पर जवाब भी मिल जाता था और एविडेंस भी मिल जाती थी मेरे सवालों की। Okay. So वो अपनी स्टोरी क्लियर कर लेते थे जैसे भी करना था। कर करा के मिनटे कर करके मेरे सामने हार्ट अटैक का ड्रामा करना, मुझे हार्ट अटैक की पिक्चर्स भेजनी, मुझे एम्बुलेंस की पिक्चर्स भेजनी, भेज के मुझे एक रोबोट बना दिया हुआ था। एंड आई तो ज़ारा मुझे यहाँ पे ये बताइए कि कहाँ किस वक़्त से आपकी रिलेशन जो है इस तरह की हुई कि उन्होंने आप पे हाथ उठाना शुरू कर दिया या मैं फिर आपको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके। जो पहला इवेंट हुआ था, ओके, वो कंसेंशुअल था प्रेशर में, क्योंकि मुझे बोला गया था कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है तुम्हारे उसके बॉस के साथ ताल्लुक रखने के लिए। एंड एट दैट पॉइंट आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई सेड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस माइंड फ्रेम में थी, but it was like I can't let my husband die. I don't know why. I don't know if I was brainwashed. I don't know if this is how it goes. I don't know. I can't explain it. Like मुझे उस टाइम का जो ज़ेन चल रहा है मेरे दिमाग में, I don't even remember. Like I didn't exist. Like मैं थी नहीं। मैं जो आपके सामने इस वक्त बैठी हुई हूँ, मैं वो थी नहीं, मैं वो लड़की थी नहीं जो पाकिस्तान से निकली लड़की थी, वो मैं थी ही नहीं। I was somebody else. I was this man's wife. That's it. और जो मुझे मैसेज करता था मैं उसकी बातों पे यकीन करती। That's it. और कुछ था ही नहीं दुनिया में। कौन माँ है, कौन बाप है, कहाँ से है, nothing. Anyways, okay. So वो काउंटर हुआ, और उस काउंटर के दौरान मेरे खामन ने उस लड़के को बताया कि कैसे उसकी बीवी को हैंडल करना है। His words were, fuck my wife harder. He recorded it. He had a camera in my face and he witnessed everything. And I'm sorry. He witnessed everything. He watched everything, even though I gave consent. I agree, I gave consent, but I don't know. I don't know why I gave consent, but he told this man how to fuck his wife. He told what to do to her, how to do to her, when to do to her. I was drinking. I had a lot of alcohol. I couldn't even pursue what was going on because I had to drink. I had to drink. I had lots of alcohol that day. I was like, I can't do this with मैं अपने होश में ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं मीडिया में पहले से थी। अगर मुझे लड़कों के साथ सोना होता तो मेरे पास बहुत लड़के हैं। Trust me, I have many people on my list. I have many fans. I have many followers. I have many people in Pakistan. If I was that type of girl, I would have gone with it before. I would have agreed pehle din se. I went to the shower. I took a shower. I remember these events because these events are the type of events that will never leave my mind and haunt me. And this is the reason why I came public.
मैंने अपना मुंह कवर किया हुआ था अपने हाथों से जब मैं शावर ले रही थी उस गंदे आदमी का, जो मैं अब उतार रही थी अपनी बॉडी से गंद. When I came out with a robe, I was wearing a robe. I came out, I went to my bedroom, and my husband raped me. He raped me, and I was screaming in pain. He didn't care. He enjoyed that pain. He enjoyed that I had just slept with another man. He witnessed everything, every single thing he witnessed, and he enjoyed it. He enjoyed it, and I was dead. I no longer existed at this point. Mera mental capacity existed nahi karti thi. Like, as a woman, as a Muslim woman, I just didn't exist. ज़ारा मैं तक कौन, मैं औरत ही नहीं थी, मैं इंसान ही नहीं थी, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती थी. लाइक मैं इस आदमी से प्यार करके बस that's all it was. I was in love with this man. I left my family for this man. I'm in America, and कोई दोस्त नहीं, कोई जानने वाला नहीं, बस यही आदमी सब कुछ है. मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ, मैं जो कहता हूँ वही तुम करो. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कभी भी तुम्हें किसी ऐसी चीज में नहीं डालूंगा जिससे तुम्हारी ईमान में या तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो तुम्हारी निगाह को. मैं तुम्हारा खावंद हूँ. उस आदमी ने दूसरे दिन फिर वही किया, फिर किसी को बुलाया. He did the same thing, except this time he called someone who was more larger than the last guy. The guy did the same thing. क्यों ज़ारा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप सह क्यों रही थी? क्यों I सह रही don't थी? क्यों know. करने दे रही थी I चीजें? was scared. He said he was CIA. He said अब मैं फंस गई हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकती हूँ. अगर मैं यहाँ से निकली, मेरी फैमिली खतरे में, मैं खतरे में हूँ, जो सब कुछ खतरे में है. अब कुछ नहीं है. अब कोई ऐसा नहीं है कि आप सीआई में घुस के तो आप बोलो कि अब आप निकल सकते हो. अब मैंने तुम्हें अपना राज खोल दिया है, तुम दुनिया में कहीं पर भी जाओगी तो तुम्हारा पीछा करेंगे. तुम अब मेरे साथ रहो, खुश रहो, जैसे मर्जी रहो, बट रहो. और कुरान पे हाथ रखता था, कुरान पे हाथ रख के बोलता था कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. ये जो भी कुछ हो रहा है ये हमारे कमरों में है, ये हमारे बंद 4 कमरों में है, कोई गवाह नहीं है, कुछ नहीं होगा. दिस इज जस्ट द वन एंड सेकंड टाइम. और मेरा जो बॉस है सिर्फ वो है, एंड दैट्स इट. मुझे ये होटल का कर दो, बस बात खत्म करो. और वो जो कैट कैरेक्टर थी वो भी यही बोलती थी, वो भी सेम बोलती थी कि मर जाएगा, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको ये गालियां दे सकती हूँ मैं यहाँ पर. आई एम सॉरी, कैन आई कर्स हियर? वो कुत्ते का बच्चा मर जाएगा. That's what she used to say. That वो मर जाएगा, वो उसका खाना खराब हो जाएगा अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी. Anyways, second time it happened again. He raped me again. अच्छा, उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया. उसके बाद मैं होश में हूँ नहीं हूँ. सुबह उठती थी, पेन में उठती थी. मेरे ऊपर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, आई डोंट नो. ये सब कुछ चलता रहा. not a schedule. कोई schedule नहीं थी. जब जो मर्जी घर में आया है, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, सब कुछ जो भी आप कह लो, उसके बाद आई डिडंट नो. It was his schedule. जाने की कोशिश की, मेरे पे गन्स निकाली. जाने की कोशिश की, अपने सर पे गन्स निकाली, अपने आप को मारने की धमकी दी. कुरान पे हाथ रखा कि मैं अपने आप को मार दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ के गई. I even posted that photo on Facebook. I even have evidence of that photo. और जब मैंने फिर जब एक पॉइंट आया that थोड़ा बहुत मुझे होश आई, मैं गालियों पे आई. तो आप कहती हैं कि आप इतना डरी हुई थी कि आप उस चीज से निकल भी नहीं पा रही थी. उसके बाद जब वो हो चुका था, उसके बाद उसकी असलियत खुली. उसने गन्स निकाली मेरे ऊपर, उसने मुझे धक्के दिए सीढ़ियों से, उसने मुझे कहाँ नहीं मारा. जो चीज जब मर्जी चाहे मार दिया, जब मर्जी चाहे प्यार कर लिया, जब मर्जी चाहे बीवी बना लिया, जब मर्जी चाहे बीवी नहीं बना ली. जब मैं कहती थी डिवोर्स तो कहता था
डिवोर्स तो नहीं तुम्हें मैं दे सकता हूँ, अच्छा मैं खुला ले लूंगी। किधर से लोगी, किधर से लोगी? मस्जिद वाला बाप नहीं था, जो मस्जिद से आदमी आया, जो जो आदमी इसके मेरे घर आया था ना इसका बाप बन के, वो मस्जिद में काम करता था एज अ स्टाफ मेंबर। वो कभी मेरे खामन का बाप ही नहीं था, वो कभी उसका बाप ही नहीं था, वो स्टाफ मेंबर था उस मस्जिद का। उस मस्जिद ने निकाह पास किया विदाउट ए मैरिड लाइसेंस। वो शादी तो थी नहीं ना, वो तो एक ड्रामा था। मैं डिवोर्स लेने जाऊं, किधर जाऊं, मैं कहाँ फाइल करूं, पासपोर्ट कैसे लूं, मैं क्या करूं? और मुझे पब्लिकली लेके जाता था हर जगह, मुझे पब्लिकली लेके जाता था बाहर रेस्टोरेंट्स में जहां पर लोग उसको जानते थे। जिस जिस जगह में, जहां पर भी, जिस भी रेस्टोरेंट में हम गए उसको सब लोग जानते थे। किसी ने मुझे कभी नहीं बोला कि यार इस आदमी का मतलब सीन कुछ गलत है। किसी ने नहीं, मुझे मुझे किसी ने कभी तो आप ये आके, कह रही हैं कि उस कम्युनिटी में आस-पास डैलस में किसी ने आपको उनके बारे में नो कभी कुछ बताया नो है? कि वो नो, कुछ ओके, किसी ने ओके। भी नहीं कुछ बोला। तो ऐसा जब आपके जबकि साथ इतनी इतनी चीज़ें होती थी, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि अपने आप को इन चीज़ों से निकालूँ? किसी तरह से कोई पुलिस को कॉल करी गई हो या कोई किसी भी तरह ओके की हेल्प ली गई हो? ओके सो आफ्टर अ व्हाइल, जब मेरी मॉम को चीजें नजर आना शुरू हुई, मतलब मेरे रिलेटेड, व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड, माय मॉम, she came to America. She's a citizen. She's lived here for a long time. She came here and she started living with me. Okay. ओके, And when she started living with me, तो मेरे खामंद फ्रस्ट्रेटेड होता था ज्यादा, क्योंकि ओके। अब माँ आ गई है ना, तो हुँ, अब हुँ। हम क्या करेंगे, राइट? बट उसने मेरी मॉम का लिहाज भी नहीं किया। और जब मेरी मॉम आई तो थोड़ी सी थोड़ा सा लूप होल मिला, थोड़ा सा ना थोड़ी सी लाइट मिली, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा समझाती थी कि बेटा क्वेश्चन करो, जो वो बोल रहा है ना उसको क्वेश्चन करो। जब वो बोलता है कि वो एजेंट है, तो उसने अगर आईडी दिखाई है तो उसकी आईडी पकड़ के उसकी पिक्चर लो, यू you नो know? उसको क्वेश्चन करो, तुम उसकी बीवी हो। ऐसे नहीं हुँ, होता जैसे हो रहा है, जैसे हुँ, तुम हुँ। हो, जिस पोजीशन में तुम हो, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि हुँ, हुँ, हुँ। सबकी शादियां होती हैं, बट कोई औरत इतने प्रेशर में नहीं रहती है, यू you नो know? हुँ, मेरे एड्रेसेस में जहाँ पर मैं रहती थी, ये मुझे मूव अराउंड जब करता था, उन कॉम्प्लेक्स में भी लोगों को पता था मैं उसकी बीवी हूँ, बट उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि आप लीज पे नहीं हो, आप लीज पे क्यों नहीं हो। उन सबको पता था मैं उसकी बीवी हूँ, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। किसी ने ये भी नहीं बोला कि हमें क्या पता विक्टिम है। लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टेक्सास में इतनी बातें होती हैं, लोग टीवी पे आके इतने भाषण देते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, बट मुझे तो किसी ने आगे ये भी नहीं पूछा कि यार आप यहाँ रह क्यों रहे हो, मतलब इस आदमी की अगर आप बीवी हो तो आपका नाम किधर है, यू नो आपको एविक्ट भी किया जा सकता है अगर आपके घर में कोई रह रहा है और वो बहुत अरसे से रह रहा है और आपके मतलब आपका नाम नहीं है लीज पे, लीज पे मांगते हैं, बट किसी नोबडी आस्क्ड। हुँ, वो हुँ। मेरे साथ जाता था अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, सबसे मिलता था ये मेरी बीवी है, they used to say okay, they used to walk out, you हुँ, know हुँ, हुँ। back to my mom. um when my mom did that, that's when she started doing that, the first step I took was I called one of my friends हुँ, हुँ। in Dallas. I had no friends when everything was going on, but there was one person who I knew from Pakistan who happened to be in Dallas, and I हुँ, didn't हुँ। know that. Okay. तो जब मैंने उसको फोन किया, तो he said, I knew he was in Texas, but मुझे नहीं हुँ, पता था हुँ। he's in Dallas. जब हुँ, मेरी हुँ। उस शख्स से बात हुई, जो मेरे दोस्त से बात हुई, तो उसने मुझे बोला मुझे मस्जिद का पता दो, मैं जाता हूँ, मैं पता करता हूँ कि क्या हुआ है। जब हुँ, हुँ। मस्जिद में गए तो मस्जिद वालों ने एडमिट किया कि हाँ हमसे गलती हुई है, इस आदमी हमारे पास आया था, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी।
इस वक्त वो स्टेटमेंट इमिग्रेशन पे पड़ी हुई है। मेरे जो दोस्त थे, एक मेरा दोस्त गया और एक उसके साथ एक और ऑफिशियल कोई गया था, नॉट पुलिस ऑफिसर बट इस्लामिक सोसाइटी में कुछ वो था। तो दोनों की स्टेटमेंट्स कहीं हुई इमिग्रेशन को, बिकॉज I what those statements basically were that this man, told us कि निकाह करो, and ये लड़की थी और हमें नहीं पता आगे पीछे क्या चल रहा है, बट हमें बोला गया था तो हमने कर दिया। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपके पास मैरिज लाइसेंस था, और उसने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपने निकाह इश्यू क्यों किया अगर आपके पास मैरिज लाइसेंस नहीं था? मैरिज लाइसेंस जरूरी होता है डालस में या कहीं पर भी यूनाइटेड स्टेट्स में, कोई भी रिलीजियस मैरिज करने से पहले। निकाह हमारा जून 1 या जून 2 को हुआ, लेकिन मैरिज लाइसेंस इश्यू हुआ जून 7 को या जून 8 को। ठीक है, so why wasn't the nikah done then? If that's the case, if they were doing the right thing, तो फिर why didn't they issue the nikah then? And even then, आपका कोऑर्डिनेटर मॉस्क का क्यों आ रहा है मेरे घर मेरे खामन का बाप बन के? Why? I don't get it. खैर, तो उसके उन्होंने बाद बोला कि वो उनके बाप हैं या मुंह बोले बाप बन के आए? बोला ये मेरा बेटा है। ओके। उसने बिकॉज़ समटाइम बकायदा ऐसा होता है बोला। ना, हमारी कम्युनिटी में लोग बोलते हैं कि ये मेरे बेटे नो जैसा है, मेरी बेटी जैसी है। नो, मैंने एक्चुअली बोला कि आप दोनों की शक्ल नहीं मिलती है, हुँ, और हुँ। उन्होंने बोला हाँ ये अपनी माँ पे गया है। अच्छा, तो अभी आपका क्या वो है कि आपकी डिवोर्स हो चुकी है? आपने कोई भी लीगल एक्शन लिया? आप का Okay, स्टेटस क्या है अभी? I'll tell you. So when that happened, जब वो हुँ, थोड़ा हुँ। सा मिला, उसकी भी थ्रेट्स उसने मुझे लिखी, मैंने वो भी पोस्ट की हैं। उसने जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी मेरी, उसने वो थ्रेट यूज किया। हुँ, पहला हुँ। पहला जो उसने स्टेप उठाया, he said that I will post those videos। फिर वो मेरे घर आया उस दिन, उसने मुझे मुझे मारा पीटा, मेरी मॉम हुँ, को हुँ, भी हुँ। धक्के दिए, फोन लेने की कोशिश की जिस फोन से हुँ, मैं हुँ। सब कुछ कर रही थी, कामयाब नहीं हुआ, चला गया। उसके बाद I went to a place called Mosaic Family Services। जब हुँ, उसने हुँ। मुझे मारा पीटा लाइक सही तरीके, जब मेरी आंख जख्मी हुई, जब लाइक मुझे नजर नहीं आ रहा था, जब बहुत सीरियस और मेरी माँ के सामने हुआ, तो मैं मोज़ेक फैमिली सर्विसेज के पास गई। जब मैंने उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। क्योंकि हुँ, जब मैं हुँ। वहां बैठी और जब मैं पूरी स्टोरी डिटेल से बता रही थी, अभी तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी दैट मैं जो लाइव एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट बहुत बहुत डिटेल में मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो जब मैंने बोला, मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर शहरयार, जो कि ही इज़ वन ऑफ द लॉयर एंड देन ही इज़ एक्चुअली मैसेजिंग अ लॉट, सो मैंने थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुए मैसेज। सो यस, आप की जब मॉम आई तो उन्होंने कॉप्स वगैरह को कॉल क्यों नहीं करी आपके लिए? क्योंकि मैं मना कर देती थी। अच्छा, मैं कहती थी नो, डोंट कॉल द कॉप्स राइट नाउ, क्योंकि मेरा स्टेटस आउट ऑफ स्टेटस था। ओके, आई वाज आउट ओके। ऑफ स्टेटस, ही तो हैड जैसे कि आपने ओवरस्टेड। बोला कि आप विज़िटर वीज़ा पे यहाँ पर आई थी, उन्होंने आपको या बुलाया, उसके बाद आप B1 B2 पे, ओके, जी B1 B2 पे आई थी ठीक और है। उसके बाद आप तो आउट ऑफ स्टेटस हो गई थी, तो आप उसकी यस, वज़ह से काफ़ी आपने डर और गए। वो मुझे बोलता था अगर तुमने पुलिस भी बुलाई तो तुम्हें पुलिस डिपोर्ट कर देगी, जबकि रियलिटी में पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है आपके इमिग्रेशन स्टेटस से। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है, दैट्स ऑल दे आस्क, व्हाट हैपेंड, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, यू नो लाइक आइस एंड police department are two different organizations, two different departments, but anyways. हुँ, So हुँ, हुँ। I went to Mosaic. I told them my case. They said this is human trafficking case. Looks like abuse. There's physical abuse. There's lots of emotional abuse, mental abuse, all types of abuse. You need to write a statement. जो कुछ तुम्हारे साथ किया गया है, तुम statement में लिखो. Okay, because I was mentally gone, I could not write the statement. तो मैंने मोज़ेक को बोला मुझे साइकाइट्रिस्ट या थेरेपिस्ट दो, मैं थेरेपिस्ट से बात करती हूँ, मैं अपनी स्टेटमेंट लिखती हूँ। I went to the therapist for a few weeks, and in those few weeks मुझे काफी हिम्मत मिली, like काफी काफी ना
वो बहुत अच्छी औरत थी, वो जो भी थी, उसने मेरी सारी चीजों को जैसे समझा, जो दिमाग में चल रहा था वैसे ही उसने एक्सप्लेन किया. Like she was a very educated woman, and I think I will thank her for the rest of my life, whoever she was. She said, जब सेशंस हमारे खत्म होने वाले थे, जब हमारा लास्ट कुछ सेशन था, तो उसने मुझे बोला, ऊपर डिटेक्टिव का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तुम जाओ, पता तो करो कि क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लेने में कोई गर्ज नहीं है. सर ओके, सो मैं ऊपर चली गई. आई वेंट अपस्टेयर्स. अर्विंग एडवोकेसी सेंटर में ही ये सब हुआ है, ठीक है. तो वहाँ पर थेरेपिस्ट भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, और वहाँ पर डिटेक्टिव्स भी होते हैं. आप आई डोंट नो पुलिस रिपोर्ट कर सकते हो कि नहीं, पर आप रिपोर्ट जरूर कर सकते हो डोमेस्टिक अब्यूज की. मैंने तो वहीं की थी. अच्छा. मैं ऊपर गई, डिटेक्टिव को किसी को रिक्वेस्ट किया, आई जस्ट नीड सम इंफॉर्मेशन, I might be a victim of something, I just want someone to talk to. They provided me with a detective. He came up, मतलब बिल्कुल सबके सामने. He said, yes, how can I help you? I said, can we talk in private? हम एक private कमरे में गए, मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई. उसने मुझे straight off पूछा, क्या करूं अब इसका? Because now I have to report it because you have told me, so I have to report it now. मैंने कहा, okay, report कर दो. जब उसने रिपोर्ट किया, तो उसके 2 हफ्ते या कुछ दिनों के बाद, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम, बट मुझे एक टेक्स्ट आया फ्रॉम एन FBI ऑफिसर स्टेटिंग दैट ही वांटेड टू मीट मी रिगार्डिंग माय पुलिस रिपोर्ट. Okay. The statement that I have given to the detective. इसके दौरान मेरे खामंद को कुछ नहीं पता था what's going on. इस टाइम तक मैं सीख चुकी हुई थी बुरे तरीके कि इसको कुछ नहीं पता होने देना. जो करना है, मेरे पास कोई जाने की जगह तो थी नहीं, सोशल तो था नहीं, ड्राइवर्स लाइसेंस तो था नहीं, कुछ नहीं था, ना कोई जान पहचान थी, सिर्फ एक ही मेरा दोस्त था यहाँ पर. तो लेट्स कितने साल से रह रहे थे वो डैलस में? आपको इस बात का कुछ आइडिया है? उस टाइम तक आप ये मतलब आपके 2000. जो हस्बैंड थे जिनसे आपकी शादी हुई, वो कितने साल से रह रहे थे डैलस में? आई डोंट नो. ओके. और डैलस में आप कहती हैं कि काफ़ी लोग उनको जानते थे? हाँ, काफ़ी लोग जानते थे, तो फिर काफ़ी अरसे से रहता होगा, या फिर काफ़ी सोशल था. क्योंकि ऐसा होता है ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में, तो इस तरह का बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई बंदा उसकी कोई स्टोरी चल रही हो या कोई इस तरह की चीज़ें वो पहले कर चुका हो, तो ख़ास तौर पे जब वो पाकिस्तान से या कहीं से शादी करके लेकर आता है, तो लोग ज़रूर बताते हैं कि इसकी तो ये स्टोरी चल रही है, तुमने ये सुना है? तो इस तरह की आपके सामने कुछ भी कोई स्टोरी किसी ने नहीं बताई? किसी ने कुछ नहीं बोला. अच्छा, और आपका गैदरिंग में आना-जाना था? कोई दोस्तों में कोई स्पेसिफिक गैदरिंग नहीं थी, बस रेस्टोरेंट्स में कभी कोई टक्कर गया तो इंट्रोड्यूस करता था कि ये मेरी बीवी है. एंड वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, मुझे प्यार से मिलते थे एंड चले जाते थे. रेस्टोरेंट्स में भी लोग प्यार से मिलते थे और चले जाते थे. ठीक है. जब ये सब कुछ चल रहा था, जब मैं मोज़ेक के पास गई, तो मैं एक इमिग्रेशन अटर्नी के पास भी गई. Okay. During the time before I met the FBI officer and after I went to Mosaic, उसके दौरान 8 महीने या 10 महीने गुजर चुके थे. Okay, so Mosaic was working slowly. I was going to counseling slowly, and I was preparing a statement. I went to the detective. I had done everything, and I was also working on immigration. I filed for WAVA, as my attorney suggested that that's the best thing to do. I filed for WAVA, which is a Women's Act Against Violence. You can petition yourself if you're a spouse of a man who abused you. I provided them all the proof, all the messages, email, सब कुछ जो भी मेरे पास evidence था, I provided it to them. And what's the status on that now? They have not, मतलब पेंडिंग में है, लेकिन उन्होंने मुझे वर्क ऑथराइजेशन, सोशल, ड्राइवर्स लाइसेंस सब कुछ दे दिया है. लाइक जितना वो मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते थे, उन्होंने मेरे साथ किया है. बट वावा का एक प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड होता है. तो आपको 6 महीने से 3 या 4 साल, आई डोंट नो, 3 साल तक वो आपको जवाब देते हैं. और मैंने 2018 की एंड में या दरमियान में फाइल किया था. ठीक है, तो it's on them. That's out of my control. Okay. When I met Ali didn't know any of this. Ali को नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ. और Ali से आप लोग एक साथ नहीं रह रहे थे? और हम लोग मतलब
बात भी कम कम करते थे, मैं उसके साथ डील भी कम ही करना चाहती थी because I ओके। want to get out वो of the आपको situation. फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे Yeah, जितना टाइम? ओके। yeah, he ओके। did. And that's another reason why I also stayed quiet. मैंने कहा काम तो तुम कर नहीं सकती हो, इससे बेहतर कि तुम बिना सोशल के या बिना किसी ऑथराइजेशन के काम करो और तुम पे कोई और कदम उठे कि तुमने ये गलत किया है, ठीक है? तो आई थिंक दैट जो तुम्हारे साथ गलत हो चुका हुआ है उसको तुम अपनी बैग में डालो और आगे निकलो और जो जो कुछ तुम सही कर सकती हो वो करो. Okay, and that's what I tried to do from that point onward. So October mein, I met the agent. The agent told me everything that was current at the time about my husband's situation. He was being convicted of a crime himself related to money fraud in the end of ओके। 2018. But क्योंकि वो केस 2019 तक ड्रैग हुआ, तब तक इतने अपडेट्स नहीं थे. And I told the FBI that मैं आपकी मदद कर दूंगी जिस भी तरीके में कर सकती हूँ, जैसे भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है? और जब भी मेरा खामद आता था मैं उससे मतलब मैं अपडेट्स देती रहती थी उस एजेंट को. कुछ भी होता था अपडेट, मैं कोऑपरेट कर रही थी. मैंने कुछ मांगा नहीं बदले में, मैं कोऑपरेट as much as I could, I was doing. And in the end of 2018 or beginning of 2019, I'm not sure, मुझे मेरे खामन ने, he was dropping me somewhere. And he started asking me questions related to the FBI, questions related to human trafficking, questions related to me accusing him of human trafficking. And then he said that apparently that agent told him about me. So that agent disclosed who I am, what I came to him for, what story I gave to him. And now I was sitting in front of my abuser, exposed by the person who was supposed to protect me, knowing I'm a victim. Okay. And that's basically how it started again. अभी क्या स्टोरी है ज़ारा आपकी? आप कहाँ, आपका क्या स्टेटस है? और जो आपके हस्बैंड हैं वो एक्स हैं या अभी Okay. हस्बैंड हैं, और कहाँ So पे हैं वो? after that, the situation weirdly changed. He admitted to everything. जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जब मैं अपनी इमिग्रेशन के केस के दौरान काम कर रही थी, तो my attorney had agreed to do a pro bono case for me on my case. जो अली ने जो भी शख्स है, जो मेरा खामंद है, whatever, जो मेरे साथ इन सब ने किया, मस्जिद वालों ने, जो भी नाम है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने जो मेरे साथ किया, they were preparing a case. But the law enforcement agent told me to back out from the case. He said कि कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला. Like, I mean, आप circles में घूमती रहोगे, lawyer को pay करती रहोगी और कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप मेरे केस में help कर दो, testify कर दो, and that's it. जब मेरे खामन को पता चल गया कि basically I know I went to the FBI and everything, उसने 360-degree angle change किया. उसने फिर थ्रेट शुरू कर दिए. उसने थ्रेट्स भी शुरू किए, बट उसने सच भी बोलना शुरू किया. उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, हाँ मेरी बीवी है, बट वो मेरे केस में हेल्प कर रही है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं मानता हूँ, बट हमने तो सिर्फ फन किया था, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, तुमने तो सब कुछ कंसेंशुअली किया था, right? Technically, according to him. He then, I don't know how, why, I don't know. I kind of lost hope in law enforcement because law enforcement basically screwed me over at this point. Where But I is he said, now? okay, right now he's in jail.
Okay, and why is that? He's in jail for 11 years. He got convicted on September 11th for 11 years in a Okay. federal facility. Yeah, for his own case. Nothing to do with Okay. my case. For his own, I honestly don't even remember what was his charges. I think there's a term for it, but I don't know the term. I can't remember the term right now. But he did something. He took money from people and all that kind of stuff, and he didn't give हम्म। it back and तो whatever. He ज़ारा, got it. अभी जो आप आई एम श्योर जिस चीज़ों से आप गुजरी वो आप जानती हैं बेहतर, अल्लाह बेहतर जानता है, और जो बंदा इन्वॉल्व था वो बेहतर जानता है। तो मैं सिर्फ ये पूछूंगी कि अभी जो आप ये कर रही हैं, तो आप चाहती हैं कि जो लड़कियां, जो लोग देख रहे हैं उससे सबक सीखें, या फिर आप जो है उसको उसको मतलब उसकी चीजें एक्सपोज करना चाहती हैं? आप एग्जैक्टली आपके जहन में क्या है अभी? Okay, so दो चीजें. हम्म। When I forgave him, which I did in 2019, I forgave him. The biggest mistake of my life, but I also don't regret it because I learned a lot of things from that experience. One thing, I thought it was just me. I thought I was मेरे साथ हुआ, एक ही बंदी हूँ, मैं एक ही बंदी हूँ, किसी के साथ नहीं हो सकता, और किसी वो मेरे साथ ही होता है 24 घंटे, तो किसी के साथ नहीं किया. No, he opened a modeling agency. Okay. When I started digging, I found out that he doesn't do just limo work and hotel work, though he never did. He is a well-known pimp in Dallas. When his case started getting close, I found out that he opened a modeling agency, which was registered on his wife's name. And उस modeling agency में उसने 5-6 लड़कियों के साथ वही करने की कोशिश की जो मेरे साथ किया, लेकिन लीगल तरीके. उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इशू किया, फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली, फॉल्स लोग डाले, फॉल्स पेमेंट्स डाली, ठीक है. और उन 5 लड़कियों को के साथ घूमता था, फिरता था, उनको दिखाता था उसके पास पैसा है. ये सब कुछ होता रहा मेरे दौरान 2019 में, and I didn't know. मुझे ये भी the FBI told me again after his sentencing. मुझे तब भी नहीं पता था, ठीक है. After that, I found out जो एक दफा मेरे खामन ने अपना एक कजन लेकर आया था मेरे घर. एक दफा एक ही कजन आया था और एक बाप आया था, ठीक है. बाप तो मैंने आपको बता दिया कि मस्जिद में काम करता था, बाप नहीं था, ठीक है. जो कजन आया था मेरे घर वो मेरे खामन का सगा बेटा था, ठीक है. जो एक कजिन मैं आपको बता दी थी, मेरे साथ उसके कजिन्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स बात करते रहते थे मैसेजेस पे, राइट. उनमें से एक उसकी बेटी थी जो कि मेरे खामन ने बोला कि मेरी कजिन है, मेरी एक्स फियांसे, और वो भी मैसेजेस मेरे पास हैं, ठीक है. एंड I mean, at this point, it was like everybody's involved. The company later on, because everything kept opening, because now no longer my husband was roaming around free. अब तो free नहीं था ना, अब तो सब कुछ open में, अब तो fucking hell, like सब कुछ पता हो सकता है. So I digged. I tried to find out what's going on, you know. The company that was the modeling company, it was registered on his wife's name. Okay. The companies that were all a part of all these frauds were registered under his wife's name. I contacted his other wives. They blocked me. They hang up the phone on me. I contacted her families. I sent them the same photos. These documents are legal documents. This marriage license is legal. Anybody can go to Dallas County right now, give my full name, give his full name, and print out this license. These things are not like यहाँ games in the पर world. मैं एक बात कहूँगी, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मेरे कुछ लोगों ने पूछा, तो मेरे इस शो का मकसद होता है कि जितने भी लोग चाहे किसी भी अब्यूजिव सिचुएशन में है, चाहे वो रिलेशन, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, मैं उनको सामने लेकर आती हूँ और मैं चाहती हूँ फैसला आप लोग करें. हर तरह के अब्यूज होते हैं, कुछ अब्यूज से हम सीखते हैं, कुछ अब्यूज से हमें जो है
एक होता है ना कि मैं कहूँगी हर तरह के केसेस से हम सीखते हैं, चाहे वो जिस तरह के भी हों, हमें सीखने को मिलता है। तो ज़ारा की स्टोरी से भी हमें चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक चीज़ जो मैं ज़ारा मुझे बार-बार शुरू से मैं आपको बोल रही हूँ, जो मुझे जी, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी उसको मासूमियत कहूँ या मैं आपने ऐसा क्यों कर गई मुझे नहीं पता कि जब स्टार्टिंग में जो मैंने कहा मुझे शुरू में भी ये शिकायत हुई कि या इतना प्यार कैसे किसी को हो जाता है ज़ारा हम्म, कि शादी से पहले आपको उन्होंने कुछ गलत चीज़ों की ऑफ़र करी जो कि हम या लड़कियाँ नहीं एक्सेप्ट करते। आपने यस, उस वक़्त अपने आप को रोक लेती ज़ारा, तो हम्म, आपको इतनी सारी चीज़ें शादी के बाद नहीं सहनी पड़ती। तो राइट, आपने उस वक़्त अपने आप को रोका नहीं जबकि वो शादी से पहले उन्होंने ऑफ़र करी थी और बहुत राइट, गलत चीज़ें थी, जो कि आई हम्म, एम श्योर आप भी एक्सेप्ट करती हैं, वो चीज़ें सही नहीं थी। ऑफ कोर्स लेकिन आप एंड इतना प्यार में हुई थी और दूसरा ये कि हम जब किसी से ऑनलाइन मिलते हैं शादी.com वगैरह पे, आप ऑल द वे पाकिस्तान में थी और वो यहाँ पर थे, तो आप लोगों को मतलब एक जब तक हमें अच्छी तरीके से एक-दूसरे के बारे में पता ना चल जाए, फैमिली से ना मिलें, आप मुझे नहीं पता कि क्या उस वक़्त आपके हालात थे कि आप लोग जो है एक-दूसरे की फैमिली से नहीं मिले, आपने उनको अपनी फैमिली से he नहीं no no मिलाया। no he did meet my family. He did go to ओके, Pakistan. He did meet my family, and I had already met his father. I even have photos of that. Like वो हुँ, पाकिस्तान गए थे मेरी पूरी फैमिली के साथ. He met my whole family. मतलब शक नहीं हुआ था. जैसे मैंने आपको अच्छा, एक्सप्लेन किया कि ये जो लाइव सेशन है ये एक स्मॉल पार्ट है. You know या details बहुत सारे हैं. You know आई एम they're श्योर they're होंगे। very tiny, and like you said, हुँ, with the why did I agree, you know, जब मैं गई, जब मैंने research करना शुरू किया कि what human trafficking is, so this is what it is, you know, हुँ, 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 grooming women to fear, like दरवाजा खोलो और इतनी डर में हो कि दरवाजा खुले तो वो बाहर निकलना ना चाहें. You know, हुँ, मेरे साथ सेम था. मेरे सामने अगर वो दरवाजा भी खोल देता था ना कि you're free to go, I wouldn't want to go. That हुँ, is हुँ, what हुँ, human trafficking is. Not all human trafficking is बिस्तर के साथ बांधा हो. You know, हम जो हुँ, फिल्मों में देखते हैं, it's a 10%. हुँ, मुझे हुँ, एक हुँ, एजेंसी ने बोला था it is 10% of what human trafficking is. Human trafficking में boyfriends के नाम पे आते हैं, husbands के नाम पे आते हैं, friends के नाम पे आते हैं, कभी आपको बिस्तर के साथ नहीं बांधते. This is the new form of human trafficking. You know, हुँ, अब देखें जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस उस पर थोपने लगा तो उसने कहा कि बेस्ट तरीका क्या है, मॉडलिंग एजेंसी खोलता हूँ, मॉडल्स को रखता हूँ. The only type of girls he wanted were Nepali girls and Pakistani girls, and his तो वो existing कितने टाइम से wives. जेल में है अभी? G, कितने टाइम से जेल में है? he has been in jail for about since September 11th. Actually, he got arrested on August 15th. So August 15th वो से लेके 2019 2019, yeah. ओके। So सो it's been अभी around 8 9 months. अभी ये बताइए कि अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? आप क्या कर रही हैं? आपने अपने आप को किस तरह से सँभाला The है और reason why I have came forward, there's a lot of reasons. जी One बोलिए। is that he has filed for clemency, हुँ, हुँ, okay, and he wants to come out. Okay. ओके। I was under false pretenses for a long time. Even though जो कुछ मेरे साथ हुआ सही नहीं हुआ, देसी कम्युनिटी उछालेगी, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, that's fine. I'm fine with it. I knew this was going to happen when I was going to come forward. That's cool. हुँ, I'm हुँ, okay with that. हुँ, What I'm not okay with is that everyone has a different type of marriage. हर किसी के बंद कमरों में कुछ लोग मार खा भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं. You know, हुँ, कुछ लोग यही भी काम सहते हैं और बिना human trafficking के सहते हैं. You know, हुँ, some people are even swingers in the desi community. मतलब हर किसी की life is different. But whatever happened to me was never a marriage. It was just a scheme. It was just to convince a woman to come into the loop, you know, हुँ, like family members fake representation कर रहे हैं. अपने सबसे छोटे बच्चे को आप ये हिसाब लगाएं कि जिस वक्त शादी.com पे वो मुझसे बातें कर रहा था, उसकी जो रिसेंट लीगल वाइफ है उसके पेट में बच्चा था. एंड शी वाज़ इन मेरे पाकिस्तान? नो, जो उसकी रिसेंट लीगल बीवी यहाँ है,
जो यहाँ थर्ड पर बीवी उसकी यहाँ है, तीसरी बीवी उसकी, 4 बीवी हैं टोटल में। एक पाकिस्तान में है, एक डालिस में भी कहीं, आई अच्छा, डोंट तो नो। आपने जैसे बोला, मुझे एक क्वेश्चन करना है, एकदम से अभी जी आपने जी। बोला वो लीगल बीवी हैं, और जब हाँ, आपकी शादी हुई तो वो लीगल थी? मुझे यही आप शो किया गया कि लीगल है, निकाह भी किया, मैरिज लाइसेंस भी लिया, ठीक है। तो आपकी और भी ओके। या और उसने मुझे साइन करके डॉक्यूमेंट भी दी तो नहीं, खैर उसने मुझे सिर्फ दिखाई, क्योंकि तो देता तो आप पकड़ा गई थी? जाता। मैं खुद गई थी डालस काउंटी, यस मैं खुद अच्छा, डालस काउंटी गई और थी। आपकी शादी हुई और आप कह रही हैं कि उनकी पहले से लीगल वाइफ थी। क्या पता लीगल ना हो, क्या पता सिर्फ निकाह हुआ हुआ I हो? actually got the marriage license out when I went to get mine. जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की इस आदमी के बारे में 2018 के दौरान, 2018 के दौरान था जब मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला। तो जब मैं अपना लाइसेंस लेने गई थी तो आई आस्क्ड देम, you know, they said, well, we have a license, but we have a marriage certificate with some other woman. And I said, why did you issue it? Why did you issue the license if he's already married in the same county? यही तो मुझे गुस्सा था कि how did you make such a mistake? इस मिस्टेक की वजह से मैं उसके कुरान की कसम, मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही करो। ये जो हम मॉडर्निज्म में रहते हैं ना, ये अमेरिका है, लेकिन इनके जो दिमाग होते हैं कुछ मर्दों के फिर भी देसी रहते हैं। वो फिर भी आपको देसी तरीके बोलेंगे कि ओ दुपट्टा लो, तुम शराफत से रहो, तुम ये करो। लेकिन बिस्तर में मुझे किसी और के साथ सुलाते वक्त मेरे खामन को मसला नहीं था, लेकिन निकाह पढ़ते वक्त उसने निकाह किया। आप समझ रहे हो, उसने फ्रॉड तरीके भी किया, बट किया जरूर। उसको नहीं जरूरत थी, अगर उसको मुझे एज अ गर्लफ्रेंड रखना था तो ही कुड हैव जस्ट सेड दिस इज you're my girlfriend, you हुँ, were हुँ। just going to stay girlfriends. Let's be honest, United States of America के अंदर कुछ, you can do anything, it's a free world. It doesn't matter if you're desi, it doesn't matter if you're Muslim, it doesn't matter if you're Christian, it doesn't matter if you're Hindu. It's a free country, you can do exactly what you want, even if you want to have a girlfriend after you're married, right? But that consent should have been taken from me, right? That do I want to be a fourth wife? Do I want to be with a man who is already married? Do I want to be with a man whose family is faking their roles into making me believe that this is who he is? सो यू You मेट know हिज़ वाइफ? what happened? आप उसकी वाइफ से मिली? I have contacted her. She हुँ, listens to everything. I sent her legal documents. I sent her pictures, photos, videos. She blocks me. ओके। बट डिड शी She एक्सेप्ट इट दैट शी इज़ she doesn't want to hear anything. I actually have a call recording of it. And वक्त आने पे I'll post that too. I after कहता है ना कि जो, मुझे अब पूरी कहावत तो नहीं पता, पर जो बंदा जलता है एक दफा तो वो मलाई को भी फूंक के पीता है, right? So when stuff got bad, there were things that I documented. हुँ, I हुँ, हुँ। was aware of some things that were being documented, such as that Texas is a one state, uh is a one consent state or something, जिसमें एक हुँ, बंदा रिकॉर्ड कर, अगर आप और मैं फर्स्ट करो कॉन्वर्सेशन में हैं, ठीक है, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं वो पेश कर सकती हूँ अगर मैं कंसेंट दूँ। तो हुँ, I had no problem recording anything as long as I'm a part of it, हुँ, you हुँ, know. हुँ। And he the minute I found out about the other girl, and I contacted other girls too, they don't want to get involved. It's like this man अब has threatened अब जो everybody. अब जो सिचुएशन है, अब तो वो ऑलरेडी जेल में है, आपने कहा 11 ईयर की उनको जेल हो गई है, तो अब आप क्या चाहती हैं? आपका क्या प्लान है? I want to, as far as I know, he has filed for clemency. And as ओके। far as I know, John Tak Minnesota, I'm not even sure if this is 110% true, but I think he's trying to get out because of the coronavirus thing. And I don't talk to him. I have not spoken to this man for 2 or 3 months, not on the phone, not text. I've blocked him from my email. I have um I basically, once he went into jail, हुँ, हुँ, okay, हुँ। my motive of going to jail to meet him was to get as much information as possible
for anybody else. क्योंकि हुँ, उस हुँ, टाइम हुँ। तक सब कुछ खुल चुका हुआ था, मॉडलिंग एजेंसीज भी, लड़कियां भी, कि वो पिम्प है, कि उसकी फैमिली भी मिली हुई है, बीवियां भी मिली हुई हैं. तो आई यूज्ड टू गो देयर टू नो what's going on. And हुँ, हुँ। also, I even told the agent that अगर मैं पता कर सकती हूँ कि पैसे कहाँ हैं, उसने कहाँ हुँ, हुँ। छुपाए लोगों के, तो मैं उसमें भी आपकी मदद करती हूँ, ठीक हुँ, है. हुँ, I हुँ। tried to cooperate every single way possible, हुँ, and I हुँ। did do that. And लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस हो गया, 3-4 महीने से मेरी उससे बात नहीं हुई, and I started kind of realizing कि Zara, like, तुम्हारे साथ कुछ छोटा नहीं हुआ. ये हुँ, वो हुँ, वाली हुँ। बात नहीं है कि घर में झगड़ा हुआ है और लड़ाई हुई है. इस बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, हुँ, हुँ, हुँ। you know. चलिए जी मैं इतना कहूँगी कि ज़ारा आपके साथ जो हुआ मुझे आप जिस तरह की भी ट्रॉमा से गुज़र रही हैं, क्या हुआ अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। जितने लोगों ने यहाँ पर देखा, आप बताइए आप लोगों की क्या थिंकिंग है ज़ारा की पूरी स्टोरी सुनने के बाद? और ज़ारा इस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी मेंटली स्ट्रेस है और जो भी चीज़ों से गुज़र रही हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। और जो है जो भी आप चाह रही हैं आपको आपकी ख्वाहिशें पूरी हों और जो है जाने से पहले कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहेंगी ज़रा जो लोग कुछ ऐसा जो लोग उससे बच सकें? First thing is, don't use shadi.com. If you use shadi.com, be very careful. अगर आप बैकग्राउंड चेक्स करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि बैकग्राउंड चेक पे अगर कोई भी औरत का नाम शो होता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि उस औरत के साथ कोई शादी बंधन वगैरह नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ठीक है. हुँ, ऑब्जर्व द पर्सन, फाइंड आउट फ्रॉम योर कम्युनिटी, यू नो. कम्युनिटी में अगर लोग वॉच कर रहे हैं जो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं लोगों के पर्सनल मैटर्स में, ये देसी चीजों को देसी मुल्कों में छोड़ दो. आप अमेरिका में रहते हो, बताओ लड़कियों को, बताओ अगर उनके खामन को आपने किसी के साथ देखा है, लड़कियों को बताओ कि हाँ इसकी शादी हुई हुई है. You know, open it. Tell the community that I know that you might be a victim of it. You need to know. You should be aware. Don't just sit there watching like a puppet. You know, everyone is responsible. ये हमारी community है. ये हम रहते हैं अमेरिका में, पर ये हमारी community है. हम अपने ही community के लोगों को protect नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? You know, हुँ, मैं अगर कोई लड़की होती ना और मैं ये देखती तो मैं उस लड़की को anonymously भी बोल देती कि यार आपके हुँ, साथ ये हो रहा है, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती ना, बट anonymously कर देती. You know, just take the step, help people, help women, stick up for women. मेरी तरह की भी औरतें हैं जो फंस जाती हैं, और and I'm not even a very conservative type person, I'm a very liberal person, but मुझे भी बुरा लगा जो मेरे साथ हुआ है, मुझे भी acceptance नहीं हुई मेरे साथ जो हुआ है. You know, so open your eyes, be aware what's going on, and when someone says something, get to the bottom of it. You know, हुँ, find हुँ, out, homework करो, हुँ, रिसर्च हुँ, करो, फाइंड आउट करो और अवेयरनेस स्प्रेड करो. किसी के साथ भी हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है, यू नो. हुँ, 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 और सिर्फ आपको एनी, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ मैं नहीं हूँ, 6 5 6 लड़कियां हैं. एक लड़की, एक वाहिद लड़की जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उससे मुझे कहा है मेरा कभी भी कहीं पर नाम ले लेना, उसको तो डिपोर्ट भी करवाया हुआ है इस आदमी ने, हुँ, ठीक है. हुँ, हुँ, जब इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हुई और जब when I got to the bottom of everything and I started finding out all the things he's done to women, it's personal now. Now it's not about Zara Mehta, now it's about women. Now it's about me. Now it's about you. Now it's about every single woman who is watching this video, that I need to make sure this man pays for what he did. So kalko, if it happens to any other woman, at least I can hold my head up and say that whatever happened to me hua. समझो हो गया, बट मैं किसी और के साथ क्यों होने दूं? मुझे मेरे हुँ, बाप ने ये नहीं सिखाया था. ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ मुझसे एक गलती हुई, पर उसके बाद जो 36 गलतियां हुई वो मेरी नहीं थी, वो हुँ, मेरी नहीं थी. हुँ। No. So be aware, stick up for your community and stick together.
वेल थैंक यू सो मच ज़ारा मेहता आपका मैं कहूँगी कि गट्स चाहिए इतना चीज़ें आके बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि इतनी आसान नहीं होता कोई आके अपनी पर्सनल स्टोरी बताना। यहाँ पर मैं कहूँगी जो लोग वॉच कर रहे हैं थैंक यू सो मच ज़ारा मेहता ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। आप क्या कहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं इसको यहाँ पे ये कह के क्लोज़ करूँगी कि जब भी आप लोग कोई भी किसी भी पोर्टल पे अपनी शादी के लिए जो लोग पार्टनर्स ढूँढ रहे होते हैं, बी वेरी केयरफुल। आप जो है अच्छी तरीके से रिसर्च करें, अच्छी तरीके से मालूमात कराएँ और जो है इतना ज़्यादा प्यार में नहीं पड़ जाएँ कि जो है गलत राउट पे चलते जाएँ और गलत डिसीजंस लेते जाएँ लाइफ में। आई होप कि ज़ारा आप का जो भी मकसद है अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे और जो है आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हों। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख़्याल रखिएगा। Sure. अल्लाह हाफ़िज़। You too. Allah Hafiz.